रामचंद्र जी के पिताजी ने यही बात समझाई थी रामचंद्र जी को बचपन में कि देखो बेटे, हम तुम्हारे पिता हैं, हमारी आज्ञा को तुम मानना, लेकिन परमात्मा तुम्हारे बड़े पिता हैं, दोनों की आज्ञा एक हो तो जरूर मानना, लेकिन हमारी आज्ञा और परम पिता परमात्मा की आज्ञा में कभी फर्क हो जाए तो बेटे हमारी न मानना, तुम बड़े पिता की मानना, परमात्मा की। और देखो भगवान राम ने यही किया। जब दशरथ जी ने पहले तो कैकेयी ने मांग की कि भाई 14 वर्ष के लिए वनवास जाना है, राम को और रामचंद्र जी को और मेरे भाई को गद्दी देनी है, तो दशरथ जी परेशान हुए। लेकिन फिर उन्होंने प्रेशराइज दिया उनको, तुमने वचन दिए, वचन से कैसे मुक्त हो गए? तो फिर उन्होंने वचन पालन के लिए रामचंद्र जी को बोला, कहा कि जाओ तो वन में जाना है, तो आज्ञा तो दे दी, लेकिन मन में नहीं थी आज्ञा। और वो जब रामचंद्र जी ने कहा कि मुझे तो बड़ा आनंद है, हर्ष है, वन में जाके मुझे संत और महात्माओं के दर्शन का, उनके सत्संग सुनने का लाभ मिलेगा, वहाँ की जनजातियों के बीच में मैं रहूँगा, निर्धनों के बीच जो गरीब हैं और तकलीफ जुदा हैं, उनके बीच में रहकर उनकी तकलीफ़ें जानने का मौका मिलेगा मुझे, और मैं 14 वर्ष तक उन गरीबों के बीच में रहकर उनकी तकलीफ़ों को देखकर उनके प्रति सहानुभूति की भावना पैदा होगी मेरे में, और मैं तब जब राजा बनूंगा तो उनका कल्याण करूंगा। राजा का यही तो काम होता है, प्रजाजन जो निर्धन है ख़ास तौर से उनका ख्याल करे। तो मैं पहले जानूँ तो सही उनकी क्या समस्याएं, और मैं संत और महात्मा और ऋषि मुनियों के सत्संग का लाभ मिलेगा। तो आपने तो मेरा पिताजी कल्याण कर दिया। तो दशरथ घबरा गए, ये तो चला जाएगा। तो राम से बोले कि राम वन को मत जाना, तुम जाओगे, तुम जो कह देना कि बड़े भाई गद्दी पे बैठता है बड़ा भाई, आज छोटा भाई, बीच का भाई, मझला भाई थोड़ी गद्दी पे बैठेगा। तो मैं बड़ा हूँ तो मैं गद्दी पे बैठूँगा, क्योंकि मैं हूँ बड़ा, तो परंपराओं का नाश हो जाएगा। ये तो परंपरा है हमारी, बड़ा भाई गद्दी पे बैठता है, तो इसलिए परंपरा का नाश तो धर्म का नाश हो जाएगा, यही धर्म है। फिर रामचंद्र जी नहीं माने इतने पर भी, तो पिताजी ने कहा कि देखो तुम ये बताना सबको और तिलक करवा के राजा हो जाना कि माता श्री ने 2 बार पिताश्री से मांगे, मुझसे तो मांगे ही नहीं। जब मुझसे मांगे नहीं तो मेरे पे लागू कहाँ से होते? तो तुम तिलक करवा के राजा बन जाना और कह देना कि माताश्री ने 2 बार तो पिताश्री से मांगे हैं, मुझसे तो मांगे ही नहीं, न मैंने दिए, तो मेरे पे लागू कहाँ से होते? ये बात भी रामचंद्र जी की समझ में नहीं आई। तब फिर दशरथ जी ने कहा कि राम तुम 14 वर्ष तो क्या बेटे, 14 महीने के लिए भी जाओगे, मैं जी नहीं सकूँगा। 14 महीने तो क्या, 14 दिन, 14 घंटे, 14 मिनट, 14 पल तो क्या, एक पल के लिए भी ये विचार कि तुम मुझसे अलग होगे, मैं बेटे जी नहीं सकूँगा, मैं प्राण त्याग दूंगा। हे राम तू वन को मत जाना। अब राम पशुपेश में पड़े कि क्या करूं? पहली आज्ञा पिता की है कि मेरे वचन का पालन करो और वन में चले जाओ, और दूसरी आज्ञा है तुम जाओगे तो मैं प्राण त्याग दूंगा, मैं उनका हत्यारा बनूंगा, मैं उनका मर्डरर किलर बन जाऊंगा, उनको मारने वाला मैं कारण बन जाऊंगा उनकी मृत्यु का। तो बोले मैं क्या करूं? एक आज्ञा पहली आज्ञा है ये, और कि तुम वन में जाओ, और दूसरी आज्ञा है वन में न जाओ। अब मैं छोटी सी उम्र मेरी, मैं क्या करूं? तब उनको याद आया, अरे मेरे पिताजी ने बचपन में उससे कहा था। क्या कहा था? बचपन में कहा था कि देखो बेटे हम छोटे पिता हैं, शरीर के पिता हैं, तुम्हारी आत्मा का पिता परमात्मा है, और दोनों में कभी टाई पड़े, दोनों की आज्ञाओं को तो मानो, लेकिन दोनों में टाई पड़ जाए तो तुम बड़े पिता की मानना, छोटे की नहीं। उन्हें पिताजी की आज्ञा याद आ गई कि पिताजी ने तो बचपन में आज्ञा दे रखी है। तो उन्हें याद आई कि बड़े पिता की आज्ञा क्या है? तो उनके बड़े पिता की तो ये है कि भाई वचन का पालन होना चाहिए, यदि वचन दिया है तो उसका पालन हो। अब पिता पालन नहीं कर पा रहे हैं, और उसमें यही है कि बेटे को बन जाना है, तो फिर बेटे का फर्ज बन जाता है कि पिता के वचन यदि वो किसी कारणवश पूरा नहीं कर पा रहा है, पिता ने कोई कर्ज लिया है और वो नहीं उतार पा रहा है, तो बेटे का फर्ज है उस कर्ज को उतारे, क्योंकि वो घर पर दाग लग जाएगा, वो परिवार पर दाग होगा। परिवार के पिता ने, मुखिया ने कोई वचन दिया है और मुखिया नहीं कर पा रहा है, तो परिवार के सदस्य, मैं हूँ बड़े, सबसे बड़ा हूँ, तो मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं पिता के वचन का पालन करूं और मैं वन को जाऊं। तो इसलिए भगवान की आज्ञा यही है, और हमारे तो रघुकुल की रीति भी यही है, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। प्राण जाए तो जाए, लेकिन वचन नहीं जाना चाहिए। इसलिए वो रामचंद्र जी ने तय किया कि पिताजी के प्राण जाते हैं तो जाएं, यदि वो आत्महत्या करना चाहते हैं तो करें, मैं
तो प्रभु की राह पर जाऊंगा, क्योंकि मेरे पिताजी ने बचपन में ही मुझसे कह दिया था बड़े पिता की बात माननी है। तो वो रामचंद्र जी ने पिताजी का चरण स्पर्श किया और पिताजी कराते रहे, हे राम तू वन को मत जाना, हे राम हे राम हे राम वन को मत जाना। और वो जैसे ही कक्ष से बाहर निकले, पिता ने अपने मन में सोचा कि राम कठोर हो गया है, पत्थर हो गया है, अब ये मानेगा नहीं। और जैसे ही राम कक्ष से बाहर हुए, पिताजी ने प्राण त्याग दिए। राम अपने पिता की मृत्यु का कारण बन गए, केवल इसलिए कि प्रभु की आज्ञा और पिता की आज्ञा दोनों में फर्क हो। तो पिताजी ने ही आज्ञा दी थी, पिताजी ने सीख दी थी कि बड़े पिता की मानना, और ये बात उन्हें याद आई कि बड़े पिता की बात माननी है। तो अपने पिता की पहली आज्ञा जिसमें सीख थी ईश्वर की आज्ञा को मानना, वो ईश्वर की आज्ञा मानकर वन को चले गए और पिताजी ने प्राण त्याग दिए। लेकिन पिताजी के घर की शान बच गई, रघुकुल की रीति बच गई। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। प्राण गए तो गए, लेकिन वचन नहीं गया। तो रघुकुल में एक ऐसा पुत्र पैदा हुआ जिसने वचन की मर्यादा का पालन किया, और इसीलिए वो कह रहा है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, मानव जीवन को मर्यादित किया। तो रामचंद्र जी ने कोई जादू की छड़ी नहीं घुमाई, जिसे कहते हैं ना दैविक भौतिक तापा राम राज्य कर का हो न व्यापा। तो ऐसा नहीं है रामचंद्र जी ने कोई जादू कर दिया हो, है सब दुखों दूर हो जाओ इस जनता से, नहीं। रामचंद्र जी ने मर्यादित जीवन व्यतीत किया, मर्यादा का पालन किया, स्वयं घर छोड़ के चले गए, वचन की मर्यादा का पालन किया, और घर को बर्बाद कर गए। पिता तड़प तड़प के मर गए, माताएं 14 वर्ष तक बिलखती रहीं। घर में कोई पादुका लेकर के घर में रामचंद्र भरत जी भी आए तो वो भी राजपाट में नहीं रहे, वो भी वन में ही रहे कुटिया डालकर, और उनकी पादुकाओं से राज्य चलाया गया, पूरा घर चौपट हो गया। एक मंथरा ने एक मिसगाइड कर दिया, एक ऐसा व्यक्ति जो घर में एक गलत परामर्श दे दे, तो उनकी माता जी को, कैकेयी माता जी को गलत परामर्श दे दी उसने, मंथरा ने गलत सीख दे दी। तो एक बचपन में भी कोई गलत सीख मिल जाती है तो कितना विनाश हो जाता है। पूरा मंथरा घर को ही लेकर डूब गई। राम को 14 वर्ष का वनवास, दशरथ की मृत्यु, घर में तड़फन, घर में कोई ये नहीं। और अयोध्या में 14 वर्ष तक दिए नहीं जले, अयोध्या में अंधेरा रहा। 14 वर्ष के बाद दिए जले, एक मंत्रा के कारण, एक गलत सीख के कारण, एक ऐसी सीख जो ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध हो। ईश्वर की शिक्षा के विरुद्ध सीख देने वाले और ईश्वर की शिक्षा के विरुद्ध सीख को सुनने वाले, दोनों का कितना विनाश होता है, ये आप छोटी सी कहानी से देखिए। तो उस लड़के ने यही कहा कि देखिए मेरे पिताजी ये मुझे किस्सा बताते हैं कि बड़े पिता की बात को मानो, तो बड़े पिता की आज्ञा यही है कि मैं हमेशा ईश्वर की इच्छा के अनुसार काम करूं और अपनी इच्छा का काम न करूं। तो मैं, ये जो परमात्मा है ये मेरा बड़ा पिता है, उसका घर मेरा अपना है, और ये सब जमीन है मेरी, ये आसमान है मेरा, मकीन है हर मकान हूँ मैं, हर एक मकान है मेरा। तो बच्चों को ग्लोबलिज्म, विश्व बंधुत्व, विश्व प्रेम की ट्रेनिंग यहाँ दी जाती है। तो ये कार्यक्रम ही नहीं है, एक ट्रेनिंग है बच्चों के माइंड की, एक माइंड को, सेट को, पूरे को ग्लोबलिज्म की तरफ ढालने की एक कोशिश है, जिससे कि दुनिया को बचाया जा सके। अब ये सारी किताबें आप देख लीजिए, इसमें 7,500 वर्ष पूर्व ये जो रामायण आई है, तो ये तो 500 वर्ष पूर्व आई है रामायण। तो रामचंद्र जी को कोई पुस्तक नहीं मिली, रामचंद्र जी को कोई पुस्तक दिव्य लोक से नहीं मिली। तो इसलिए, लेकिन कृष्ण जी को पूरे दिव्य लोक में एक पहली पुस्तक जो इस संसार की है वो गीता भगवान कृष्ण जी को मिली 5,000 वर्ष पूर्व, और रामचंद्र जी का आगमन पहले हुआ 7,500 वर्ष पूर्व, तो उन्हें कोई पुस्तक नहीं मिली। तो इसलिए राम को हिंदू धर्म में अर्ध अवतार मानते हैं और कृष्ण को पूर्ण अवतार मानते हैं, तो इसको पूर्ण अवतार मानते हैं। तो लेकिन अवतार थे, और उन्होंने ऐसा समाज बनाया कि मानव जीवन मर्यादित कर दिया। तो 7,500 वर्ष पूर्व राम आए थे,
और उनके ऊपर गाथाएं हैं। तो क्या 500 वर्ष पूर्व क्या हुआ, तुलसीदास जी का जब जन्म हुआ तो बचपन से ही उनकी मम्मी ने रामचंद्र जी के बारे में सिखाया, मर्यादा के बारे में बताया। बचपन से ही उनका जीवन तुलसीदास जी का मर्यादित हुआ। फिर थोड़े बड़े होने लगे तो स्कूल में गए, गुरु जी के यहाँ गए, हर जगह राम की चर्चा उन्होंने सुनी। सुनते सुनते वो इतने प्रभावित हो गए कि वो रामचंद्र जी के ऊपर उन्होंने बहुत घूम घूम कर लोगों से पूछा कि भाई उनके बारे में और कोई बताइए कहानियाँ, और कोई बताइए। तो जहाँ से भी जो मिला सब इकट्ठा किया और फिर उन्होंने एक पुस्तक तैयार की, छंद लिखे, चौपाई लिखी, रामायण तैयार कर दी। तो ये जो रामायण है वो रामचंद्र जी के जीवन की गाथा है। रामचंद्र जी का जीवन कैसा था, उनकी शिक्षाएं क्या थी, सब इसमें समाहित है। यह थे सिटी मॉन्टेसोरी स्कूल के संस्थापक प्रबंधक एवं प्रख्यात शिक्षाविद डॉक्टर जगदीश गांधी, जिनका मानना है आज मानव जाति को जय जगत के नारे को बुलंद करने की आवश्यकता है तथा विश्व में वास्तविक शांति लाने के लिए बच्चे ही सबसे सशक्त माध्यम हैं। डॉक्टर गांधी द्वारा शिक्षाप्रद आध्यात्मिक बातें इन प्रतिष्ठित चैनलों द्वारा नित्य प्रसारित की जाती हैं तथा रोजाना उनके विचार CMS FM रेडियो 90.4 मेगाहर्ट्ज से भी प्रसारित किए जाते हैं। छात्रों, शिक्षकों व अभिभावकों के मार्गदर्शन हेतु डॉक्टर जगदीश गांधी द्वारा लिखित पुस्तकें साहित्य भारती इंटरनेशनल, न्यूमन ग्रुप, 4C, अंसारी रोड, दरियागंज, नई दिल्ली 110002 से प्राप्त की जा सकती हैं। To heal the world with the power of Jai Jagat, City Montessori School since 1959 has been actively working to construct the defences of peace in the minds of students, for which CMS in the year 2002 was awarded with the UNESCO Prize for Peace Education. A Guinness World Record holder for being the largest city school in terms of number of students enrolled. CMS education revolves around the twin poles of godliness and globalism through 4 pillars of education, namely universal values, excellence in all things, global understanding, and service to humanity. It is no wonder that City Montessori School's Gomti Nagar first campus has been awarded first prize for academic reputation at all India level by the Education World magazine in its India School rankings of 2015. It is also awarded first prize for being the best co-ed school in Lucknow as well as in Uttar Pradesh. CMS founder Dr. Jagdish Gandhi has been motivating parents and generations of good and smart children through holding special prayer assemblies and divine education conferences. 54 years ago, I started this school on 1st of July 1959. The kind of education that is being given to the children is only material. But I realized the man has 3 realities of life. Man is a material being, man is a human being, man is a divine being. He needs a balanced education of all the 3 realities of life. Therefore,
I started this school with a mission to impart a balanced education to the children. Mahatma Gandhi said, I will not follow the beaten track. I follow this. I will create my own path. So I have created my own path to bring about a change through education. Change the mindset of the children. Discrimination against Baha'is is not merely a few incidents of injustice by the Iranian government. It is a matter of official state policy. This policy was summarized in an Iranian government memorandum obtained by the UN Special Representative on Iran in 1993, produced in 1991 by Iran's Supreme Revolutionary Cultural Council and approved by Islamic Republic's Supreme Leader Ali Khamenei. This document, entitled The Baha'i Question, sets forth specific guidelines for dealing with Baha'is. The memorandum specifically calls for Iran's Baha'is to be treated so that their progress and development shall be blocked. Since the establishment of the Islamic Republic of Iran, the government has been carrying out a systematic campaign to deny Baha'is the right to employment. As of 2007, at least 780 incidents of direct economic persecution against Iranian Baha'is have been documented by the Baha'i international community. These include closing of the shops, dismissals, the actual or threatened revocation of business licenses, and other actions to suppress the economic activity of Baha'is. Economic pressure on Iran's Baha'i community is acute, with both jobs and business licenses being denied to Baha'is. Government jobs, including not only in the civil service but also in such fields as education and law, have been denied to Baha'is. Since the years immediately following the revolution, and Muslims often are pressured to fire Baha'is in their employment in the private sector. Baha'i school children at all levels continue to be monitored and slandered by administrators and teachers in schools. Secondary school students often face pressure and harassment, and some have been threatened with expulsion. Religious studies teachers are known to insult and ridicule Baha'i beliefs. Young Baha'is continue to be denied access to public and private colleges and universities in Iran as a matter of official policy, which requires that they be expelled if they manage to enroll and authorities learn that they are Baha'is. Those working in support of the Baha'i Institute for a Higher Education, an ad hoc volunteer effort of the Iranian Baha'i community to provide education for its young people, have been at various times arrested, harassed, and imprisoned. We therefore appeal to the dignitaries and judicial luminaries gathered in this conference to raise a concern for the proper and the lawful treatment of the Baha'is of Iran. We appeal to you in your capacity as some of the most senior figures in your government systems to ask your governments to urge Iran's leadership to honor its commitment to the International Covenant on Civil and Political Rights and International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, both of which Iran itself has formally ratified and is therefore bound to by international law. Iran has to respect the rights of all its citizens and desist from persecuting any of them solely on the grounds of their religious beliefs. The session began with the talk by Dr. Jagdish Gandhi, convener of the conference, on content of education for the 21st century. I bear witness to my God that thou hast created me to know thee. Know thee means know your teachings. And to worship means obey your teachings. The only and only way to worship God, the only way is to obey His teachings. There is no other way of worshipping. Rest of the rituals, we can do any kind of rituals, this is up to us.
we can satisfy ourselves. But unless we know the teachings of God, unless we reflect on the teachings of God, 1 hour reflection is preferable to 70 years of pious worship. If we read Holy Quran for 70 years, it is of no use. If we read Bhagavad Gita or Bible or Tripatak for 70 long years, it is of no use. Take a verse, एक कुरान की आयत ले लीजिए, reflect on it, go into the deep of it, understand its meaning. It is sufficient for you, not only for this life, for lives to come, thousands and thousands and millions of lives to come. That one teaching will be sufficient. There's so much of regenerative power in these holy books God has put into. This conference is duty-bound to come up with practical suggestions towards achieving enforceable international law. Distinguished guests, may I be allowed to be presumptuous and make the following suggestions. The root cause of many localized conflicts, such as civil wars, is the failure at country level to observe human rights, good governance, and the rule of law. Child labor is a key driver to lack of access to quality education, and the incidence of child labor itself prevents or inhibits children from accessing or fully benefiting from the school and exercising their fundamental right to education under both the Convention of the Law of the Child. Що для вас, діти, ця естафета розпочнеться саме тут. Дякую за увагу і бажаю всім щастя. Once again, I have convinced that the essential issues, essential everywhere. For me, particularly important that these fundamental questions we are discussing among children and with their direct participation, because they will take this relay race. And I'm so happy that there is such a school, a City Montessori school, and for you kids, because your relay will start here. Thank you for attention. Wish you happiness and productive work. I remember when at the age of 14, I joined the struggle for Guyana's independence, and then spent almost 3 decades after that to fight for majority rule and for the restoration of democracy in Guyana through fair and free elections. I remembered my involvement in the protests for the end to the war in Vietnam, and for my modest efforts in promoting the cause of national liberation in various parts of the world. My fight was then against many violations of law and justice, but here in Lucknow, the fight is for some specific goals, primarily world peace. What we are doing, what we have done, a section of mankind became possessive and greedy. In that greed, it started material development, dehorsed the environment, and forgot the welfare of children. Wars, interterrestrial terrorism, drug peddling, inter-country infiltrations, global warming, air, water and sound pollution, and child abuse are creating havoc on the well-being of children. The unflinching commitment of Mr. Gandhi in the cause of children's safety and well-being across the world is proverbial, and this Assembly of Chief Justices of the world serves as an illustration of that commitment. Through this Assembly and from this forum, year in, year out, for now 17 long years, Mr. Jagdish Gandhi's passionate appeal has resounded loud and clear to the international community to take appropriate measures, including the institution of a World Parliament, an impartial international law-making body with power to enact enforceable international law applicable to all countries in order to safeguard the future of the world 2 billion children. National borders are man-made and
Greed has undermined the welfare of children, particularly in the last 80 years with world wars and environmental degradation, and he therefore called for an international body to deal with these global issues through binding international law. Excerpts from the parallel sessions in the morning being conducted in various conference rooms. Conference room number 1. The topic for discussion, Peace, Education, Cross-Cultural Understanding, chaired by Honorable Justice Chala Kodanda Ram, Judge, Andhra Pradesh High Court, India, coordinated by Mrs. Prema Subramaniam, Senior Principal, CMS Rajajipuram First Campus. Conference room number 2 on the topic Creation of World Parliament to enact enforceable world law. शिक्षात्मक सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं चिंतन हेतु विश्व एकता सत्संग में आप सभी सपरिवार सादर आमंत्रित हैं।